Today we'll discuss about the like sedimentary rock. What is sedimentary rock? Sedimentary means like the rocks which is split from the like the igneous rocks. Okay, the splitting down due to the splitting of some particles and some rocks, they make the sedimentary so deposit of the some particles. It's called like a deposition of the or breaking down of the some rocks. Okay, now I will explain like the rocks that is formed due to the deposition of sedimentation form of the layer. Okay, it is not a sedimentary rock. Like I will explain this very easily. Like you can example of the igneous rock like the igneous rock make from the lavas. When the lava is blast, okay, they make like igneous rock. Okay, then the sedimentary, then when the igneous rock is break down due to like the high pressure, like the wind, temperatures, movement and pressure of the earth, it's make a breakdown between the particles. This when after the moving of the some particles from one place to another place is sedimented. That sediments make them large like strong mountains. That is called sedimentary rock. Okay, when a rock is split but due to different spores, its small particles and the sedimented deposit on different places. This is called sedimentary rock. Okay, what is the characteristic of the sedimentary rock? The sedimentary characteristic of the rock is formed due to deposition of rock is called sedimentary. First characteristic like the when the moving or deposit of the particles is split down and moving from the then deposit on some places is make a sedimentary rock. Okay, and second is presence in layer. It is always presence in layer. An example like कोई भी चीज़ टूटता है वो जाता है तो एक लेयर बनाएगा फिर दो लेयर बनाएगा तीन लेयर चार बनाएगा इसको बोलेंगे फॉर्मिंग द लेयर. ओके, नाउ कम थर्ड इस प्रेजेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल. हाँ, इसमें फॉसिल फ्यूल होगा क्योंकि इसमें फॉसिल फ्यूल क्यों होगा क्योंकि लेयर के फॉर्म में ना मान लो कहीं प्लांट गिर गया ठीक हो गया हमेशा लेयर के फॉर्म में होगा. In fossil fuel is present like the coal, petroleum, natural gases, and CBM, coal bed methane. कोल बेड मीथेन लाइक तो कोल के बीच में जो मान लो ये कोल का लेयर है ये भी कोल का लेयर है इस बीच में जो लेयर गैसेस हैं इसी को हम बोलेंगे CBM, कोल बेड मीथेन. This was situated in the form of the antilines and the extilines. Antiline means like कहीं उठा कहीं धसा like ऐसे है ना. ये उठा हुआ है ये धसा हुआ है पार्ट इसको हम बोलेंगे एंटीलाइन. इसको बोलेंगे जो उठा वाला पार्ट है उसको बोलेंगे एंटीलाइन और जो नीचे धसा हुआ पार्ट है उसको बोलेंगे एक्सिलाइन. ओके, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द फोल्डिंग सेडिमेंटरी रॉक. है ना इसको हम लोग फोल्डिंग सेडिमेंटरी रॉक भी बोलेंगे. सेडिमेंटरी रॉक्स ब्रेक डाउन ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ नेपिन. जब हाई प्रेशर के थ्रू नहीं इसको नेपिन बोलेंगे. मान लो एक कोई चीज़ है ठीक है लाइक एग्जाम्पल मान लो ये है इसमें बस हाई प्रेशर लगा है प्रेशर क्या हो जाएगा टूटेगा कहीं ना कहीं एक वाला पार्ट इधर दूसरा वाला पार्ट इधर इसी को बोलेंगे नेपिन. नेपिन जो टूटा हुआ पार्ट उसको बोलेंगे नेपिन. सिचुएशन इन द हिमालयस रीजन है ना हिमालय रीजन में ज़्यादा ही मिलेगा. ओके, द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयस ड्यू टू द नेपिन. देयर आर सम एग्जांपल ऑफ द फोर्सेस रॉक. दिस आर द एग्जांपल. अब आफ्टर हम लोग आ रहे हैं टाइप्स ऑफ द सेडिमेंट रॉक. ओके, अब टाइप्स क्या क्या है इसका. पहला है फिजिकल प्रोसेस. जिस टाइप फिजिकल होगा फिर केमिकल होगा बायोलॉजिकल होगा ठीक. फिजिकल क्या होगा ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फिजिकल थिंग्स लाइक द सैंड इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ वाटर एयर विंड. इस जो काम डिपेंड होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंटेशन ठीक. और दूसरा केमिकल प्रोसेस व्हेन एग्जाम्पल द कार्बन कार्बोनेट एंड कॉल. The example of chemical process and biological due to the biological process. There are three types of the sedimentary rock. Okay. Now the Gondwana rock system in India is famous for the coal in Gondwana like the Bihar, like the Jharkhand, West Bengal and Odisha. This is like the Gondwana region. Okay, in this region there are a lot of coal is present. Okay, we also like 99% of the coal in the India is coming from the like the Gondwana region only. Total 90% of production of coal and 20 years coal resources of coal. 90% of resources of coal and demand valley, Damodar Valley reports the Bogado
Jharia and Raniganj, Sonla River Valley, Ma River Valley, Brahmaputra, Damodar Valley. This is a region with rocks available. Okay. And Volga River Valley is famous for the petroleum in a similar manner as the Mahalena River Valley. Okay, it's like the with the coal is presented. Like the metamorphic rock. What is metamorphic rock? Metamorphic rock just like is a rock formed due to the metamorphic means old rock, known as the metamorphic rocks. When the shape and size and colors is changing due to the composition of the rocks changing due to the pressure and the temperature. These rocks are formed into known as the metamorphic rock. Okay, now we can get the characteristic of the metamorphic rock. First, there are the rocks what are in the metamorphic rocks. Okay, and temperature and pressures are important factor that's metamorphic rocks. These stone hardened rocks, unlike the fossil fuel due to the high temperature, similar unlike fossil fuel. Generally, the rocks are the example of the impervious rock, like the main. So this is like now let's discuss this rock cycle. What is rock cycle? मतलब कि इंग्रेडिएंट्स सेडिमेंटल फिर सेडिमेंटल्स मेटाफोरिक फिर मेटाफोरिक इंग्रेडिएंट्स ये हमेशा बनते रहेगा जिसमें रॉक साइकिल बोलेंगे. अब मान लो सेडिमेंटल्स इन इस इंजीनियस रॉक से सेडिमेंटल कैसे बनेगा. मान लो इंजीनियस रॉक है वो विंड या वाटर के थ्रू टूटेगा फटेगा तो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होगा. जब डिपॉजिट होगा तो क्या बनेगा सेडिमेंटल बनाएगा. अब सेडिमेंटल इंजीनियस से बनेगा. मान लो कि बहुत सारा डिपॉजिट डिपॉजिट होगा उससे बहुत हाई प्रेशर बना. जब हाई प्रेशर बनेगा फिर से वो लावा बनेगा फिर लावा बन के फिर ब्लास्ट होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग फिर इंजीनियस बन जाएगा. अब मान लो अब सेडिमेंटल्स मेटाफर कैसे बनेगा. मान लो सेडिमेंटल्स रॉक है ठीक है. वो क्या होगा ना चेंज होगा बहुत टाइम के जाके चेंज होगा केमिकल प्रोसेस से कुछ अच्छा चेंज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मेटाफॉर्मिक. ओके, अब मेटाफॉर्मिक से क्या बनेगा. मान लो बहुत मेटाफॉर्मिक बन गया फिर वो चेंजिंग होगा फिर विंड से वाटर से ये सबसे फिर से क्या बनेगा सेडिमेंट बन जाएगा. अब सेडिमेंट मेटाफॉर्मिक से इंग्रेडिएंट्स बनेगा. मान लो कि मेटाफॉर्मिक का लेयर बहुत सारा लग गया लगने के कारण फिर से प्रेशर बनेगा फिर से वो लावा का फॉर्म निकलेगा फिर वो टूटेगा फिर वो कलर चेंज करेगा कुछ कुछ पार्ट्स उसको बोलेंगे फिर हम लोग sedimentary to metaphorical rocks. This is like rock cycle. Thank you so much.